Hello students. Now in this class again we will discuss about the way, the method to reduce or increase the friction. एक बार फिर से in details we will see how can we reduce the friction and how can we increase the friction. लास्ट क्लास में जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किसी भी दो सरफेस के बीच, किसी भी टू मशीनरी पार्ट्स के बीच यदि फ्रिक्शन रिड्यूस करना है तो स्मूथनेस ऑफ सरफेस को इंक्रीज करना होगा एंड रफनेस ऑफ सरफेस को डिक्रीज करना होगा. दैट मीन्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन वी हैव टू increases the smoothness of the surface and decreases the roughness of the surface. इसके just opposite, if we have to increase the friction between two surface, then we have to decrease the smoothness of the surface and increase the roughness of surface. तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है रफनेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. रफनेस जितना ज़्यादा होगा किसी भी सरफेस का, तो दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच फ्रिक्शन उतना अधिक होगा, एनर्जी लॉस उतना होगा, वियर टीयर ऑफ मशीनरी पार्ट्स उतने होंगे, वियर एंड टीयर of wheels, of cloth and shoe and slippers. Now one by one we will see the way, the method to reduce and to increase the friction. First of all, we will discuss about methods to increase friction. The way to increase friction. In some cases, greater friction between two surfaces is required. First of all, when the friction between the tires of automobiles and road is less, they will slip. यदि surface of road and surface of tire के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए तो क्या हो सकता है, वे फिसल सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं. दैट मीन्स आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक लेवल द व्हीकल्स, द ऑटोमोबाइल्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड. ब्रेक लगाने के बाद भी ऑटोमोबाइल्स जो हैं, जो गाड़ियां हैं, वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगी. टू इंक्रीज फ्रिक्शन, तो सरफेस ऑफ रोड और सरफेस ऑफ टायर के बीच फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए वी हैव टू इंक्रीज फ्रिक्शन ग्रूव्स आर मेड इन द टायर. तो क्या करना होगा, ग्रूव्स आर मेड, क्या बनाने होंगे, ग्रूव्स. जितना ग्रूव्स अधिक होगा, ग्रूव्स दैट मीन्स इररेगुलरिटीज. हम देखते हैं टायर को घिसा हुआ रहता है तो देख कर बताते हैं कि देखो ये टायर बहुत ज़्यादा घिस चुका है, रिस्की. व्हाई? इट इज नॉट सुटेबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल्स. तो जितने ज़्यादा ग्रूव्स होंगे फ्रिक्शन उतना अधिक होगा, व्हीकल का कंट्रोल उतना अच्छा होगा.
Next is the friction between the sole of a shoe and the ground is increased by providing spikes. शू और सरफेस ऑफ ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? स्पाइक्स नहीं, कील लगे होते हैं जूते में। वो कील रहने से क्या होता है कि जो ग्रिप है सरफेस पर शू का वो स्ट्रांगली होल्ड करता है। एंड दिस इज डन टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ स्लिपिंग बाय एथलीट्स। एथलीट जितने भी होते हैं उन सभी के शू में स्पाइक्स लगे होते हैं। व्हाई? टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ स्लिपिंग, टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ स्लिपिंग। Without spikes, the friction between the sole of shoe and the ground is less, and it increases the chances of slipping. Chances of slipping, friction जितना कम होगा, स्लिप करने के चांसेस, स्लिप करने की पॉसिबिलिटी उतनी अधिक होगी। Now we will discuss the methods to reduce friction. How can we reduce friction? Sometimes there is a need to reduce friction between two surfaces. Some ways by which friction can be reduced are as follows. बहुत ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर हमें फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस रिड्यूस करने पड़ते हैं, स्पेशली मूविंग मशीनरी पार्ट्स। पॉइंट फर्स्ट, पॉलिशिंग एंड स्मूथनिंग ऑफ रफ सरफेसेस रिड्यूसेस फ्रिक्शन। पॉलिश कर, स्मूथ बनाकर, किसी भी रफ सरफेस को स्मूथ बनाकर या उस पर पॉलिश करके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। बाय पॉलिशिंग एंड स्मूथनिंग ऑफ रफ सरफेसेस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं? मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो मूव करते करते उसमें एक हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो हीट जो है धीरे धीरे मशीनरी पार्ट्स को डैमेज कर देता है, और ये कारण होते हैं उसके वियर एंड टियर, टूट-फूट का कारण है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। ऑल्सो greater friction decreases the speed of moving parts of machines and automobiles. फ्रिक्शन इंक्रीज होने से स्पीड ऑफ मूविंग पार्ट्स भी अफेक्ट होता है। ऑटोमोबाइल्स या मशीनरी पार्ट्स के स्पीड जो हैं वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। फ्रिक्शन जितना अधिक होगा स्पीड ऑफ मूविंग पार्ट्स उतने कम होंगे, फ्रिक्शन जितना कम होगा स्पीड ऑफ मूविंग पार्ट्स उतने अधिक होंगे। सो वी कैन से द स्पीड ऑफ मूविंग पार्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। स्पीड, वेलोसिटी, यह फ्रिक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शन इंक्रीज होने से स्पीड डिक्रीज होता है, फ्रिक्शन के डिक्रीज होने से स्पीड इंक्रीज होता है। इट ऑल्सो डैमेजेस देम, ये उन्हें क्या करते हैं? डैमेज भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। अधिक फ्रिक्शन होने के कारण मशीनरी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, बिकॉज द मूविंग पार्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर।
मूविंग पार्ट्स एक दूसरे से रब करते हैं एंड cause undesirable heat to reduce friction. These moving parts must be lubricated with a suitable oil or grease. तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए इन मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेटेड मटेरियल से रफनेस को कम करना चाहिए। जो भी ऑयल कहीं यूज करते हैं, कहीं ग्रीस यूज करते हैं, और इसका यूज कर हमें उसके रफनेस ऑफ द सरफेस बिटवीन टू पार्ट्स रिड्यूस किया जाता है। यानी दो मूविंग पार्ट्स के सरफेस पे ऑयल, ग्रीस या और कोई भी लुब्रिकेटिंग मटेरियल का यूज कर उसके फ्रिक्शन को कम कर उसके सेफ्टी के चांसेस को, उसके लाइफ पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हील्स, बॉल bearings and roller. Wheels, ball bearings and roller bearings are used in machines to reduce friction between the moving parts. By using wheels, by using ball bearings or roller bearings also reduce the friction. It is difficult to slide a suitcase without wheels. Without wheels किसी भी सूटकेस को, हैवी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना, उसको ड्रैग करना ऑन द ग्राउंड, ऑन द सरफेस, it is very difficult. But by using the ball bearings and wheels we can easily move a suitcase or an heavy object. It is difficult to slide a suitcase without wheels on the floor, whereas a suitcase with wheels can be moved easily. This is because wheels reduce friction and rolling friction much less than sliding friction. As we know that wheels, roller bearings and ball bearings convert slide friction into rolling friction, and as we know that the rolling friction is very less than sliding friction. Ball bearings are used in wheels of vehicles, fans and various other machines, and by applying lubricating material we can increase the smoothness of the ball bearing and it decrease the friction in wheels and other machinery parts. तो बॉल बेयरिंग का यूज कर भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, या कर सकते हैं कि किसी भी मूवमेंट को करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है उस फोर्स को कम लगाने की आवश्यकता है। तो here we discussed about the way, the method to reduce and to increase the friction. फिर से एक बार इन द सिंपल वे रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, लेसन को स्टार्ट से ध्यान से सुनेंगे। द टॉपिक, द लेसन इज फ्रिक्शन। द टर्म फ्रिक्शन, दैट मीन्स अ फोर्स, अ कॉज, the force which opposes the motion of a moving body. Opposes motion, that means the cause which always opposes the motion is known as friction. Types of friction:
स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो नाम से ही पता चलता है स्टैटिक, दैट मीन्स द फ्रिक्शन इज एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेशनरी स्टेट above the surface of other object is known as static friction. Statics, that means stationary। तो static friction वह फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कारण लगता है। यदि एक हैवी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है, अब इसके सरफेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, जो इसे मूव करने में इसका अगेंस्ट अप्लाई किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट लग रहा है, वह स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि द फोर्स, द फ्रिक्शन इज एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेशनरी स्टेट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, that is known as static friction. Static friction is the strongest friction. Next is sliding. तो sliding, जब slide किया जा रहा है, when the friction is exerted when an object slide over another object। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड हो रहा है, उसे ड्रैग किया जा रहा है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन when an object rolls over another object। When an object rolls over another object, the frictional force is known as rolling friction, and rolling friction is less than sliding friction। तो rolling friction सबसे less friction होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे हाई फ्रिक्शन होता है। सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक का, और सबसे कम जो होता है वो रोलिंग का। तो कहीं भी किसी बॉडी को यदि हमें मूव करना होता है तो हमारा फर्स्ट एफर्ट होता है कि हमें स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया जाए। अगर रोलिंग नहीं हो रहा है तो स्लाइडिंग में किया जाए, और अगर स्लाइडिंग है तो हमें उसे